Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit DivineVastu.net. Rewa Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello viewers, I am your host Aditi Lamba and this is World of Divine Vastu, bringing you all aspects of Vastu knowledge and tips. Today on the show we have a special segment to help our viewers understand the relationships between Vastu, numerology and astrology, which often gets confused. Let's welcome on our show our very own Vastu expert Rewa Kumar ji and our special guest for the show today, Astro-Numerologist Mr. Ritesh Kumar as a special guest on our show. And Rewa ji, thank you again. Hello Aditi. So this is indeed a very exciting episode that we are doing. We have an astro-numerologist with our very own Vastu expert, Rewa ji. Rewa ji, this show and this concept was one of your ideas. You wanted to bring on a special guest to help people understand the relationships these 3 different aspects have with each other, as well as clarify the confusions. So let me start this with you. How will you define the differences or the similarities between Vastu, numerology and astrology, or are there any similarities in that aspect? First of all, I just want to tell all the viewers that they all have come from one family. Just like कि एक पेरेंट्स है, उनके 3 बच्चे हैं. Right. तो एक ट्री ले लीजिए, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसके बीच में वास्तु भी है, आयुर्वेदिक है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ऑल डिफरेंट थिंग्स. पर यहाँ थोड़ा सा है कि वास्तु इज बेस्ड all around the one dwelling, means the all people who are residing in the same place. अगर एक घर में रह रहे हैं तो वास्तु उससे रिलेटेड आपको सारी एनर्जी बताता है. Right. उसको अगर कोई डिफेक्ट्स होंगे उन्हें रेक्टिफाई करेगा एंड देयर रिजल्ट्स विल बी परमानेंट अगर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं. बट द एस्ट्रोलॉजी जहाँ तक आज मिस्टर रितेश भी हमारे साथ में हैं, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो मैं सोचती हूँ कि वो प्लैनेट्स के साथ में इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करती है, उनको डिफाइन करती है. बट इट इज़ ट्रू कि हम लोग न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स, जैसे कि आपने कोई घर लिया, कोई बिजनेस है, तो उसके जो नंबर होते हैं उसको जरूर हम एज ए न्यूमरोलॉजी उस पे जरूर मैं कंसल्ट करती हूँ. Because that's also important, right? When you're placed in a certain location, that place has an address, it has a number. And Mr. Ritesh, in that way, maybe you can come in and help us with that, taking there a house, which is what, you know, Vastu focuses the most on, or someone's location or someone's workplace, that number of the house or that street, how prevalent is that? It is very relevant and it is very necessary too. The reason is this, that when Rewa Kumar ji, when she goes to someone's place, so she do the calculation as per the Vastu norms. And if everything is done, yes, prosperity is definite. Right. They will get that thing. But if their numbers are not compatible, and how numbers are calculated, that's a total different aspect. The reason in numerology, same way we have 9 planets, 2 shadow planets and 7 main planets. We calculate that number of the house as per your life path number, root number and your other numbers. If they are compatible, yes, you will get all the benefits. But if it is not compatible, then what happens is this, the struggles, the challenges. Right. So many times it happens, as Rewa ji, we discussed many times, that everything is good. But then comes their own kundali, their own chart, their Right. life chart. Also comes their numbers. If their numbers are not compatible, there will be challenges. So Vivaji, does Vastu impact that numerology or astrology of a person? Do you see that ever impacting it? Because someone that's living in a house, right, regardless of their own charts or their own numbers, that house and that location, as we have discussed in so many episodes, is so important. How does that affect each other? अदिति, ऐसा होता है कि according to the date of birth, we always tally with the Vastu Kundli chart that which direction is favorable for you. मैं इसको एक्सप्लेन करने में आपसे एक केस हिस्ट्री अपनी डिस्कस जरूर करना चाहूँगी ना, वेरी सिंपल वे.
क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगी बट केस हिस्ट्री डिस्कस कर रही हूँ। एक ट्विंस है, पैदा हुए हैं, सिर्फ उनका 30 सेकेंड्स का डिफरेंट है, टाइम इज द सेम, डेट ऑफ बर्थ इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, डे एवरीथिंग, प्लेस सब कुछ वही है, सिर्फ 30 सेकेंड्स का फर्क है। चलिए आज क्या रीज़न है कि एक भाई तो इतनी हाइट्स के ऊपर में है और जो दूसरा भाई है शायद वो एक टाइम के खाने के लिए भी परेशान है, उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। When I went over there कि दे सेड कि एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट तो वही आ रहा है, 30 सेकेंड्स इज नॉट ए बिग, उससे भी शायद कम थे, कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल अगर चार्ट देखते हैं तो वो क्यों हाइट्स पे है या दूसरा क्यों डाउन है। तो जो मैंने देखा उसी को कि जो छोटा वाला ब्रदर है वो जिस घर में रह रहा है आफ्टर मैरिज, उस घर का बिल्कुल वास्तु गलत था जिसका उस पर असर पड़ रहा था। बड़ा ब्रदर जो उस घर में जहाँ पैदा हुआ था वहीं रहा था, जिसका 30 सेकेंड्स का फर्क था, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। तो उस समय मेरे सुनने ने बोला कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको इंडिविजुअल प्लैनेट्स को ज़रूर बताती है जिनकी कई बार पोजीशंस चेंज भी होती रहती हैं, कि अगर आज ये प्लैनेट है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन वास्तु जो है वो पूरे घर को क्लब करके हम आपको बताते हैं कि क्या डिफेक्ट्स हैं या आपके लिए क्या फेवरेबल है। लेकिन ऐसा अगर कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें ये पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में ये डायरेक्शन सूट करेगी, उसको टाइम बिंग सूट करेगी, तो फिर सारे मेंबर्स कहाँ जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हस्बैंड के लिए अगर उसको साउथ सूट कर रहा है, चलिए मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली सूट कर रहा है, देन रितेश व्हाट हैपन कि अगर उसकी वाइफ को वेस्ट सूट कर रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकली हम इस पॉइंट्स को उसका वास्तु का देख सकते हैं कि वास्तु उसका ठीक है या नहीं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसी बात के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। अक्सर होता है कि हमने आपकी कुंडली देखी है, आपका उस पर जियोपैथी स्ट्रेस है या आपकी उस कुंडली से पता चलता है कि आपको ये जगह सूट नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो रेवा जी की जो पहले अभी हमने टॉपिक पे बात कर रहे थे कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनको हॉस्पिटल की भूमि सूट नहीं कर रही थी? Exactly. तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में देखिए कई बार ये बातें होती हैं, बट लिसनर्स वन थिंग आई विल श्योरली लाइक टू मेंशन दिस हियर कि एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है, दिस इज अ परफेक्ट साइंस, इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन। सो सेम वे अगर हम जो लोगों के पास जाते हैं, वास्तु के एक वैलिड प्रिंसिपल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के भी एक वैलिड प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी तरीके से आप कुंडली से देख के ये बता सकते हैं नहीं ये दिशा सूट करती है कि इसका फेसिंग घर ले लिया जाए, या इनकी कुंडली में तब ये घर मिलेगा, या इनके पास में चैलेंजेस रहेंगे। आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह की भूमि, उस एरिया की जाकर वही भूमि लीजिएगा, वही जमीन लीजिएगा, वो आपको सूट करेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट रेवा जी आस्क्ड, उस चीज के लिए बताना चाहूंगा कि हम कुंडली से ये जरूर देख सकते हैं कि इनको ये जो भूमि का सुख है कि नहीं। तभी लोग ये क्वेश्चन करते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि जी मैं प्रॉपर्टी अगर लेता हूं तो मुझे सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बट हम ये नहीं बता सकते कि आपके वास्तु की ज़मीन के नीचे यहाँ पे ये है, या आपके घर की किचन के अंदर वहाँ पे ये हुआ है। ये चीज़ें हम नहीं बता सकते। हम ये ज़रूर बता सकते हैं आपके लिए दिशा ठीक है, और वो वास्तु में भी होता है। वास्तु में भी जब रेवा जी ये चीज़ करती हैं तो सबसे पहले देखती हैं कि उनकी कुंडली, उनका जो राशि बनती है, उनका जो एक एलिमेंट है, वो कौन सा बढ़िया है जो एनहांस करेगा। So Ritesh, when a person comes to you and they have obviously an apparent problem, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं चल रहा, and you're reading their charts, how often do you have to consult with the Vastu aspect of it? See, if it comes, everyone stays at home, कहीं तो रहता, चाहे होटल में अपार्टमेंट में रहता हो। तो अब ये चीज़ पे जब हम लोगों को लगता है कि कुंडली में लगभग चीज़ें सही हैं, या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आने वाले टाइम में ठीक होंगे, तो रेमेडियल मेजर हमने तो दे दिया। देन इट ऑल्सो कम्स टू माई माइंड कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ भी कोई ना कोई तो दिक्कत ज़रूर है, गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं आपकी कुंडली, जब हम लोग अपने क्लाइंट की कुंडली देखते हैं तो उनका चार्ट देखा जाता है कि ascendant क्या है, राशि क्या है, 12 घर में क्या चीजें बैठी हैं। Astrology and numerology, you're only looking for one client as well, but you're not looking for where they're living, how they're living, how those corners, how those directions are impacting. That's true. Then I have to, or I recommend to consult with Rewa ji so she can make that कुंडली, उसे हम लोग कहते हैं ग्रह कुंडली, वो घर की कुंडली है, उसको बनाया जाता है। पता चलता है ये कि जैसे मैंने किसी को बोला, इस पे भी एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग बात करते हैं, किसी को बोला कि येलो सफायर आपने पहनना है इंडेक्स फिंगर में,
आपने वहां पे वो इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर तो नहीं पहना, पर आपने ब्लू सफायर दूसरी उंगली में पहन लिया, आपको सूट ही नहीं करता, कंपैटिबल ही नहीं है। सेम वे वास्तु में रेवा जी ये बताती हैं कि अगर आपको साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम चाहिए तो मास्टर को वहीं रहना है, वो किसी और दिशा पे नहीं जा सकता, वहां पे कंफ्यूजन होगी। और जहाँ तक मुझे पता है इस बात के लिए, जहाँ तक रेवा जी से ज्ञान मिलता रहता है, हम चीज़ें देखते हैं और जो लोग मेरे पास आके बताते हैं कि उन्हें कैसे बेनिफिट हुआ, चीज़ें आई हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों में रेवा जी लोगों के दुख दूर कर देती हैं। और वो क्यों? क्योंकि वास्तु की जो ग्रिप और वास्तु की जो कमांडमेंट चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने जाके कुछ पढ़ लिया या देख लिया, इट हैज़ द रेलिवेंट रीजनिंग बिहाइंड दैट। Right. And Riva ji, when clients do come to you and they have these issues, how often do you have to go back and forth between Vastu and numerology and astrology of a person? कब आपको बहुत ज़रूरी होता है कि किसी बंदे की लाइफ फिक्स करने के लिए you have to have that one aspect invited into it as well? सेम वे अदिति की, जैसे कि मैंने विजिट किया है और हाउस वास्तु कंप्लाइंट है एंड एवरीथिंग इज गुड, घर का बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में कि कहीं ना कहीं उनको लड़की का मैरिज सपोज कर दिया, उन्होंने अपने घर से मैरिज कर दिया, लेकिन उनकी लड़की अपने घर में बहुत ज्यादा इन लॉज में डिस्टर्ब है। राइट। तब मैं उनको जरूर कहती हूँ कि इस घर का वास्तु तो ठीक है, जो घर में होना चाहिए जो आप है, लेकिन आपको अपने बच्चे की तरफ से अगर स्ट्रेस मिल रहा है और उस घर का मैंने वास्तु नहीं देखा, तो बेटर है कि बीइंग अ मॉम और पेरेंट्स आप इस चार्ट को एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली आप जाके डिस्कस करें रितेश से, क्योंकि कुछ मैंने आपसे जैसे कहा है कि एस्ट्रोलॉजी को जो इंडिविजुअली प्लैनेट्स को देखती है, देन ही इज द बेस्ट जो उसको देख सकता है। Right. मैं घर की दीवारों को देख सकती हूँ, मैं उस घर की एनर्जी को फील कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के डिफेक्ट्स को देख सकती हूँ, लेकिन अगर उस घर के पर्टिकुलर नंबर्स को देखना है Right. या इंडिविजुअल चार्ट को देखना है, तो तब हमारे को एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं जरूर रितेश जी के लिए recommend करती हूँ। So Riva ji, when people do have those issues, do most Vastu experts such as yourself do have those relationships with or consult, an astrologer or a numerologist? Would you say that that's the best way to, in order for someone to live a peaceful life, to have both of those aspects balanced? What do you both have to say about that? It's not that. Rewa ji have ample of knowledge about this subject too. We, astrology, Vastu, Numerology, these are like a family, they are siblings. Exactly. They are siblings. So what happens is this, sometimes it's like a brainstorming. She's a Vastu expert. She is she have a PhD. Right. In Vastu. So what happens is this, she already have this knowledge, but sometimes things are out of that thing which is on astrological or numerological way. तब वो चीज़ पे कंसल्ट करा जाता है, समथिंग लाइक यू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर हैव द नॉलेज, ओके यू हैव अ हार्ट डिजीज, बट I would like to send you to a specialist. Same way it happens vice versa. If I feel it's regarding to Vastu, I recommend to her. So this is the way it goes. Though I have some knowledge of Vastu, but it does not mean that I'm a Vastu expert. Exactly. So having that one Yes. aspect is very important. I think what we are trying to understand here is Vastu really is the base for a lot of things. At times your personal life could be completely perfect, but then the place you're residing in and the place you're working in, then the way you're sitting, your furniture, everything really has that impact. And it's really important to find that relationship. Wouldn't you agree? Yes, of course, why not? क्योंकि आपको उस एनर्जी को, उस ऑरा को महसूस जरूर करना है, क्या वो हमें एनर्जी ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही, या वहाँ का जो ऑरा है कि ठीक है कि नहीं है, तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं। बहुत जल्दी से एक बताना चाहती हूँ, कहते कि जब सुनामी आया था तो कितनों को लेके चला गया था। Right. क्या सबकी प्लानिटरी पोजीशन खराब थी, क्या उस जगह का जियोपैथी स्ट्रेस था, या क्या था? Exactly. लेकिन ये नहीं सोचता कि सुनामी आने का कारण क्या था, क्योंकि हमारी अर्थ के नीचे भी वो जो जियोपैथी स्ट्रेस है, जो मैग्नेटिक प्लेट्स हैं, वहाँ पर भी है, जिसकी वजह से आपको सुनामी आती है। तो अगर ये कहें कि वहाँ दुनिया खत्म हो गई, तो क्या मतलब सबका ही प्लैनेट खराब कर, या सबके घर का वास्तु खराब था? ये हम नहीं कह सकते। That relationship and finding that is the key. And Yes. understanding that base and building on that base is exactly what we're working here on. Yes. Beautiful. More on Vastu and its impact along with astrology and numerology right after this break. Stay with us on World of Divine Vastu. Welcome back to World of Divine Vastu, and I'm your host Aditi Lamba. We are talking to Rewa Kumar ji and Mr. Ritesh about the essence and combination of Vastu along with astrology and numerology.
right before the break, we were talking about how they sort of correlate, be it Vastu, numerology, or astrology, and how the combination of it and looking at all the aspects is very important for peace and for harmony and for a good life. Revaji, Vastu, a big part of Vastu has to do with where you live or where you're working, the house, that location, that building. As well as Riteshji, numerology is numbers, which is again related to a house number or the street you're living at or anything that has to do with the planets as well as the numbers. In that aspect, I would like to have a discussion about the relationship of two. And Revaji, when we're looking at that Vastu of a house, नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अदिति, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो इन्हीं डायरेक्शंस में रहते हैं। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको जो घर का नंबर है, जो आपका लाइफ पैथ का नंबर है, जो भी आपका रेडिकल नंबर है, वो उस नंबर से जो घर का नंबर है या बिजनेस नंबर है उससे कितना मिलता जुलता है और कितना बेनिफिटेड होता है, तो इट रियली वर्क्स। अब आती है क्या वो प्लैनेट्स हमारी डायरेक्शंस में है कि नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन हम कभी भी नहीं बदल सकते एज वास्तु प्रिंसिपल्स, उनकी जो जगह डायरेक्शंस में वही रहेंगे। अब हमारा मर्करी प्लैनेट है, मर्करी ऑलवेज बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जुपिटर प्लैनेट है, उसकी एक ही जगह है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, तभी हम नॉर्थ ईस्ट में पूजा की जगह बनाते हैं। सन प्लैनेट इट इज इन द ईस्ट, क्योंकि वहाँ हमारे को ड्राइविंग फोर्स देता है। साउथ ईस्ट जो है दैट इज रिलेटेड विथ वीनस प्लैनेट, क्योंकि घर का खाना बनता है, वीनस को फीमेल को एनर्जी मिलती है। साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट जो आपको पावर देता है। साउथ वेस्ट इट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट प्लस राहु प्लैनेट है इसका, जो कि आपको पूरी ताकत देता है, डोमिनेट करने के लिए भी आपको पावर देता है, स्टेबिलिटी देता है। वेस्ट आ जाइए, इट इज रिलेटेड विद द सैटर्न, शनि के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जगह ही वेस्ट डायरेक्शन में है। So in directions का actually relationship with the planets. This Yes. actually exists. Yes. So there's a Yes. huge relation between all these three that we've been talking about on जी the हाँ, show. मैंने पहले भी बताया था कि जब इन प्लैनेट्स को अपनी जगह नहीं मिलेगी तो उनको गुस्सा आएगा ही आएगा। अगर आपका प्लैनेट की अगर मार्स की जगह साउथ में है, अगर मैं मार्स की जगह साउथ को उठाकर मैं बोलूँ नहीं तुम तो नॉर्थ की तरफ बैठोगे, तो वो मर्करी प्लैनेट्स की आपस में जब झगड़ा होता है तो उसकी नेगेटिविटी घर के सभी मेंबर्स पे आती है। Definitely. तो वेस्ट जब सैटर्न है, नॉर्थ वेस्ट है, दैट इज रिलेटेड विद द मून प्लैनेट, और जो केतु प्लैनेट आ जाता है वो हमारा मरकरी के साथ आता है। अब ये सारे प्लैनेट्स जो हैं इन्हीं डायरेक्शंस के साथ जुड़े हैं। इन प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह जब उस स्थान में मिल जाएगी, उस बिजनेस में, उस ड्वेलिंग में मिलेंगी, तो उसी प्लैनेट्स ने हमें क्या देना है वो पावर हमारे को घर से मिलती है। मरकरी प्लैनेट है, पैसा देता है, नॉर्थ से पैसा आएगा। नॉर्थ ईस्ट जुपिटर प्लैनेट है, आपको ब्लेसिंग्स देगा। सन आपको प्लैनेट है ईस्ट से रिलेटेड, आपको ड्राइविंग फोर्स देगा, आपको फेम देगा, नेम देगा। साउथ ईस्ट वीनस आपसे प्लैनेट है जो आपको इतनी पावर देगा कि आप घर की फीमेल्स को खुश रखें, घर की जो लेडीज हैं वो खुश रहें, झगड़ा नहीं हो, ये होगा। साउथ आपको जो भूमि का मार्स है वो आपको उस जगह का सुख देगा, मतलब कि आपकी भूमि का सुख देगा, आपकी प्रॉपर्टीज बनेगी। साउथ वेस्ट जो केतु से राहु से है प्लैनेट, वो अगर वो अपनी जगह पे साउथ वेस्ट में है तो आपको ग्रोथ दे देगा, आपको इतना पैसा, हिडन पैसा भी मिल सकता है। कहते हैं ना कि जमीन ये सोना हो गई, ये धरती हमें सोना हो गई, वो मिलेगा। सैटर्न है, वेस्ट है, जो जस्टिस देता है, कर्म देता है, मीन्स कि जो हम अच्छा करेंगे वही हमारे बच्चों पे आएगा, या जो भी हमारे बच्चों के कर्म है सब उससे जुड़ा सैटर्न देता है। नॉर्थ वेस्ट है, वो एयर एलिमेंट मून प्लैनेट से है, जो आपको इमोशंस के साथ में, आपकी लव लाइफ से, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, कई बार कर्जा चढ़ जाता है, कई बार आप अपने बहनों से, भाइयों से झगड़ा करते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोशल लाइफ से अलग हो जाते हैं, हमारा लोन पास नहीं हो रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वो सारा हमारा नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा है। तो ये सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे बैठकर हमारे को देते हैं। तो यही 9 प्लैनेट्स हमारे घर की 10 डायरेक्शंस में बैठे हैं, और यहाँ प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, या जो इस घर के बीच में 10 डायरेक्शंस के बीच में जो बंदा रह रहा है, लोग रह रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल होगा, जो भी रेडिकल नंबर या लाइफ पैथ नंबर होगा, वो उस घर के होम नंबर से जरूर टैली किया जाता है। तो वहां पे हमारे को न्यूमरोलॉजी की जरूरत पड़ती है।
Beautiful. I just have to say that I'm actually very surprised with the impact of the astrological 9 planets to the directions, which I did not actually know about. So basically, you are involving all these aspects into Vastu, which is Vastu is bringing a bigger picture. Ritesh, as an astro-numerologist, you're really well aware in both the fields. What you have to say about what Rewa just said, and how important are when someone comes to you and they want advice about their work or their home life, how often do you sort of relate the numerology with Vastu? See, it's again two different things. First, when someone approaches me, we always go with astro-numerology aspect. So for that, we go for 12 house placement, how those 12 houses are looking, what are the numbers, are they a compatible number or no. Then I always come up with this, do you have your own home? They say yes. Then I say this is your evil number, bad numbers, because all numbers are not compatible with each other. Right. For an example, if your radical number is 9 and your life path number is 1, 9 is Mars, number 1 is Sun, they are not compatible with Rahu and Shani because those are karmic numbers. Shani is a full karmic number, Rahu is a partial karmic number. If your house is on number 4 or number 8, then automatically there will be fights, challenges and everything. So then when we tell them about this thing to them, then we explain, okay, let's see this. Have you ever got your Vastu done? Right. Then they come up, oh no, we never did, we never thought of. It's America, we never get this. Then I recommend Rewa because then we come to the root. Okay, number is not compatible, this is one thing. Challenges are there, we can do remedies, we can rectify it by the colors, by some other things, some shapes. Then they approach Rewa then Rewa go and she see, okay, what is happening, what's the reason behind that. Now, as she was telling about the planets, that planets are there, same way in numerology and astrology, for 12 houses, the placement of stars, the placement of these ruler demigods is the main thing. And for numerology also, 1 to 9, there are 9 planets. 2 are shadow planets, Rahu and Ketu. Rest are the main planets. They are stable, they're stagnant, they are strong planets. So we also go for that calculation. If your numbers are compatible, your directions are good, undoubtedly your life, I won't say will be the perfect, but it will be very good. Beautiful. And with you two experts, I must ask you, if, for example, I want to go have a workplace right now, I want to go buy a house, what would be the key elements for me to look at? How would you define an ideal house with the perfect Vastu and the perfect numbers? Okay, so for this thing, number is compulsory, Vastu, perfect Vastu is compulsory. If you have these two things, then we can always assure you one thing, if you bought this house and this number is compatible, then multiple houses will be there. You will be buying multiple houses. But if, God forbid, it is not compatible, then just get it fixed. Rewa, in that case, could you give us an example of where a house that you did Vastu for and the numerology really helped a person? When I did Vastu, because I never predict what they will get, to be very frank. Astrology, numerology gives you the predictions. You will have 2 houses, 4 houses. But I always explain, yeah, I have rectified this property, but I bless you that you should grow your property. Unfortunately, after that, what happened? They just want to start their business. And they said, yes, we are doing good. They want to know, I want to start this business from my home. I said, yeah, this is the best direction from your home. You start your business from here. After that, she went to meet as a numerology and as the astrology part of that. She went to see Mr. Ritesh. She went over there and Ritesh helped them astrologically, yeah, and the numerology. Now, after that, now the people have investment for the 2 properties. They have bought 2 more properties. They have invested. Now they are having 3 properties along with the business. And husband is also doing very good. So they got the growth from the astrological part also, numerological part, and the Vastu defect which I rectify along with that, they are blessed with the good business and with the houses. Because sometimes the astrological, they recommend the stones. Because the stones colors has to be also enhance their body, whatever, there is a planet positions. Right. The same way, in Vastu also, I cannot ask them to wear the stone on their hands because only individually I am not rectifying their body. I am rectifying the whole house. So I also take the help of colors to enhance the all colors according to the directions that which color I want on that wall. Either it should be in the curtain or some cushions or the paintings. So these things are.
I think in the astrology or the numerology, they people are also trying to help them with the stones therapies also. So everything is there, but the few things, the geopathy stress, yeah, these things, that is very hard. Not anyone can explain astrology or the numerology. Yeah, this house is in your kundli, it is showing the geopathy stress, don't buy this house. How can you say that? But it is true that if we will follow the Vastu principles and the numerology with the numbers helps us. So I have seen lots of clients, they are doing very good. I think what we all realized today was the relationship between Vastu as well as numerology and astrology that's so important for anyone to live a peaceful and life in harmony, as we always talk about. Thank you so much for being with us, Riteshji, as a special guest on our show. And Revaji, thank you again for giving us such great insight into Vastu and other aspects that affect it as well. And that's a wrap for this week's edition of World of Divine Vastu with our very own Rewa Kumarji and our special guest, Ritesh. Send us your questions and queries for Revaji on info@TVAsiaUSA.com. Join us again, same time, same place. And do remember, it's not a miracle, but a result of Vastu science, which is remarkable. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit DivineVastu.net. Dr. Rewa Kumar, your Vastu specialist.